Hello, welcome back to this lecture again. So this is a daily dose of mathematics, and I'm Ajay Kumar, and I'm a lecturer in mathematics. Okay. So what we have studied in the previous class is the concept about the logarithm. Logarithm which I'm पढ़ी. So I'm just going to recap some ideas that we have studied earlier. Okay. Logarithm I'm पढ़ी. Log of the base a of a थिला. तमान that is a what? 1. कहीं ना जितने हम आगो एक्सपोनेंशियल कन्वर्ट करें a ର पावर 1 इज इक्वल टू a है तो जो लॉगरिथम कन्वर्ट कला बेलू एटा एमती लिखा हुए बुझला सेमती लॉगरिथम ऑफ a बेस ऑफ 1 एटा केते 0 काहे केबो काहे ना जो a ର पावर 0 कला बेलू आम कौन लिखा 1 लिखा जाए तो लॉगरिथम कन्वर्ट कला बेले सिंस दिस इज ए ग्रोथ रेट एंड दिस इज हाउ मेनी टाइम्स वी आर ग्रोइंग so that this is the answer we are end of okay এটা হচ্ছে আমার রেজাল্ট আসলা তো লগারিদম কনভার্ট কলা বেলকু লগ অফ এটা হচ্ছে আমার যেহেতু বেস মানে গ্রোথ রেট এটা তারপরে এটা হচ্ছে রেজাল্ট আর এটা হচ্ছে হাউ মেনি টাইমস উই আর গ্রোইং হলা তারপরে আর গোটে কনসেপ্ট আমি পড়িলে লগ অফ বেস এ অফ পি প্লস লগ অফ বেস এ অফ কিউ ইজ ইকুয়াল টু কেতে লগ অফ বেস এ অফ পি ইন্টু কিউ है पढ़ी है बर्तमान जदि पी इज इक्वल टू क्यू है जदि पी इज इक्वल टू क्यू सपोज लेट है जदि पी इज इक्वल टू क्यू है केमती कन्वर्ट करा एटा लग ऑफ ए बेस ऑफ पी देख क्यू बदले मुझे पी लिखी लग ऑफ ए बेस ऑफ क्यू इज इक्वल टू लग ऑफ ए बेस ऑफ पी इंटू पी है ताने log of a base of केते log of a base of p log of a base of p माने 2 log of a base of p is equal to log of a base of p square हला बुझी लगी जदि मु आ गोटे log of a base of p मु ऐड करी देखो दिस द आंसर वी हैव गॉट दिस आ गोटे log of base of देखो log of a ऑलरेडी 2 log a base of p अछि हला देखो ए मेन इक्वेशन रे जदि मु आ गोटे लग ए बेस पी मु ऐड करबी ऐड कले मात्र के एटा कोन हो लग ऑफ ए बेस ऑफ पी थिला पी इंटू पी थिला मु आ गोटे पी ऐड कली हला एटी कोन हला ना 2 + 1 3 log ऑफ ए बेस ऑफ पी इज इक्वल टू log ऑफ कोन ए बेस ऑफ पी क्यू एमिति गोटे गोटे ऐड करनेले केते आसीबो एपटे पी क्यू हला बेलको एपटे 3 एमिति हला तो बेसिकली केते log of a base of p to the power n is equal to nothing but n into log of a base of p. Okay, this is the answer we have got. Okay, now you go for another one. I'm पढ़ी कौन log of 5 base of 125 125 is equal to केते ना 5 को आम केते थर कौन केते गुण कला 125 आसी 5 इंटू 5 इंटू 5 3 थर जी दिस आंसर इज 3 सेमती log ऑफ 5 बेस ऑफ 1 केते इज इक्वल टू केते 0 बर्तमान मुझे देखिए log ऑफ 5 बेस ऑफ जदि मु कौन करबी log ऑफ 5 बेस ऑफ जदि log of 5 base of 25 करबी तमाने के दिस इज इक्वल टू 2 जदि मु आम ऐड करथिले नाउ यू विल सब्सट्रैक्ट ओके कले केते log of 5 base of 125 minus log of 5 base of 25 is nothing but this 3 minus 2 the log of 5 base of 125 minus log of 5 base of 25 is nothing but what 1 हला बर्तमान 1 आसला देख केमी 1 आसला देख ए 125 ए 25 कौन कले आम डिवाइड कले ताने log ऑफ 5 बेस ऑफ 125 डिवाइड बाय 5 कले केते आसला ना log ऑफ 5 बेस ऑफ 5 इज इक्वल नथिंग बट 1 आसला आंसर बुझला तो जते बेला आम कौन करछु मन कर 3 रो पावर 2 इंटू 3 रो पावर 3 ताने कौन 3 रो पावर 2 + 3 5 करछु हैला
तापर 3 रो पावर मन 3 अच्छी डिवाइड 3 रो पावर 2 कले 3 रो पावर 3 माइनस 2 करूँ तापर दिस इज नथिंग बट 3 रो पावर 5 एटा 3 रो पावर 1 तो जो आम लोगारिथमिक कॉन्सेप्ट यूज करूँ जिते बड़े मल्टिप्लिकेशन थिले से बड़े एडिशन हुए आ जिते बड़े डिवीजन थिले से बड़े सब्ट्रैक्शन हुए कि एडिशन थिले कौन हे एडिशन होगी थिले मल्टिप्लिकेशन हेबो सब्ट्रैक्शन थिले डिवीजन हेबो बा वाइस वर्सा मीन्स मल्टिप्लिकेशन थिले एडिशन हेबो एडिशन थिले सॉरी सब्ट्रैक्शन थिले डिवीजन हेबो बा डिवीजन थिले सब्ट्रैक्शन हेबो बुझी पारलो सेति में आमे गोटे फॉर्मुलेट करले कोन ना आम पढ़ी कौन लॉग ऑफ ए बेस ऑफ पी प्लस लॉग ऑफ ए बेस ऑफ क्यू इज इक्वल टू व्हाट लॉग ऑफ ए बेस ऑफ पी इंटू क्यू करथिले बर्तमान करवा लॉग ऑफ ए बेस ऑफ पी सब्ट्रैक्शन log of a base of q is nothing but log of a base of p by q है this is the कौन formula okay this is the formula we have got okay this is the formula we have got now देखो आगे फॉर्मूला पढ़िबा हमें now we can see the change of base law okay so log of a base of b is given to us then we can change our base what is our base exactly base is our a we can change this base so one formula is there log of b by log of a and we can write any ways we want okay suppose x is equal to log of a base of b then when आम जो कन्वर्ट करवा एक्सपोनेंशियल फंक्शन रे आम कौन लिखिपर यहाँ a to the power x is equal to b लिखिपर है तो बर्तमान कौन करिया बोथ साइड कौन करिया log of c base of a to the power x is equal to log of c base of b एम लिखिपर देखो यहाँ यही पार कहीं आम बेस आम ग्रोथ रेट सब सामान नहीं है तो यही हिसाब से नेक्स्ट स्टेपटा लिखिपर देयर इज नो प्रॉब्लम है तापर आम गोटे फॉर्मूला में लिखी कौन लॉग ऑफ कौन सी टू द्वारा सॉरी लॉग ऑफ सी बेस ऑफ ए टू द पावर एक्स इज इक्वल टू एक्स इंटू लॉग ऑफ सी बेस ऑफ ए एमती लिखिपर लिखिले कौन हे लॉग ऑफ ये कौन हम एक्स इंटू लॉग ऑफ सी बेस ऑफ ए इज इक्वल टू लॉग ऑफ सी बेस ऑफ बी है ता माने एक्स इज नथिंग बट लॉग ऑफ सी बेस ऑफ बी डिवाइडेड बाय लॉग ऑफ सी बेस ऑफ ए लिखिला दिस द फॉर्मूला वी हैव गॉट है तमें एक्स माने केते लॉग ऑफ ए बेस ऑफ बी तो दिस इज इक्वल टू नथिंग बट लॉग ऑफ ए बेस ऑफ बी को आम भी एमती लिखिपर है तापर सपोज इन दिस फॉर्मूला c इज इक्वल टू b है लेट c इज इक्वल टू b है जब c इज इक्वल टू b है माने केते log ऑफ a बेस ऑफ b इज नथिंग बट log ऑफ c बेस ऑफ b बाय log ऑफ c बेस ऑफ a कि आम कौन log ऑफ b इज इक्वल टू c ने तो जो c अच्छी c बदल आम रिप्लेस करिया b है b रिप्लेस कले कौन हे log of b base of b by log of b base of a हो किंतु आम जानी log of b base of b माने कहते 1 so 1 divided by log of b base of a से यही फॉर्मूलाटा बर्तमान एमती लिखिपर इट मीन्स कौन log of a base of b is nothing but 1 by log of b base of a. This is another property we have got. Hello.